आप कौन है? I am for the petitioner, my lord, sir. पूरा रामायण खत्म हो गया और सीता कौन है अभी आप आए हैं? कितने साल बाद आए इस केस में? रोज ये केस का हियरिंग हो रहा है, आप फीस लेकर गायब हो गए। जो क्वेश्चन हमने किया उस पर बोलिएगा, कहानी मत बताइएगा। My lord, sir, no notice has been served to the... चलिए बैठिए, अब आप समझ गए कितना आप पढ़ कर आए। पुराना कहावत है ना कि घास खाए कौन और मार खाए कौन, वही हो रहा है। आप ले आइए ना किसी पीएसयू के लॉ ऑफिसर को भी अपने यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एज पर द गाइडलाइन वन एडवोकेट मीन्स एन इंडिपेंडेंट एडवोकेट हु हैज नो कनेक्शन विद पीएनबी। सुनिए मिस्टर शाही, द पंजाब नेशनल बैंक हैज वायलेटेड द गाइडलाइन ऑफ द बैंक फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एज पर द ओन एडमिशन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। आप हैं पीएनबी, आप हैं आरबीआई। यस मिस्टर अमाइकस, बोलिए। Filed a supplementary counter affidavit. Yes. Bringing on record, my lord, the locker policy and what steps we have taken against the then. Yes, what steps you had taken? बैठिए तो मिश्रा जी, इनका चेहरा नहीं दिख रहा। कॉपी हमको मिला ही नहीं है। हमको क्या एफिडेविट में नहीं, आप हमको बताइए। You tell me the steps and if you broke open a wrong locker, what remedial steps did you take at that time? There are two issues. Number one, what happened was, I'll just give the background, that the new branch in Raza Bazar was being created, and therefore from Danapur, the entire 75 lockers were shifted. Amongst them was this locker, and unfortunately in the CBS system, it was not entered that, it was presumed that it has been surrendered. And therefore, no notice was issued, there is something amiss. No notice was issued to the hirer, but an inventory was prepared in terms of the guidelines, in which besides two senior officials of the bank, there was a lawyer also, an independent witness also. That lawyer is your panel lawyer or independent lawyer? He was in the panel. So he is not an independent witness. But as per the guidelines, one advocate had to be... No. As per the guideline, one advocate of PNB is not required. As per the guideline, one advocate means an independent advocate who has no connection with PNB. My Lord's will. चलिए आगे बढ़िए और बोलिए आप। जब बाद में ये सब हुआ, क्रिमिनल केस भी लॉन्च किया, ब्रांच मैनेजर कुछ दिन जेल में रहे, ट्रायल स्टेज में। Disciplinary proceeding was initiated against two officers, including the then branch manager. The charges were there. It was for proved charges. My lord, penalty has been imposed against him. Penalty of? My lord, penalty of reduction by one stage in the time scale of 3 years. And what about the second man? The second man is the Bankar Chaudhary. He was also issued charge sheet under major penalty. That is annexure G. What is the punishment on the Pankar? Jail. The punishment on the Pankar? Punishment on the? This Dipankar. Dipankar. ये है, इनको खाली माइनर पेनल्टी हुआ सेंशर का, उनको मेजर पेनल्टी हुआ अबरार अहमद को। और किसको आपने वो लॉकर दिया? एक एम्प्लॉय ऑफ क्लर्कल कैडर के एम्प्लॉय को। ठीक है, दिया ना। जी। लॉकर इज ए वेरी sought after affair thing these days in a government bank. कब हमको आज दिलाएंगे? आज ही चाहिए हमको, बोलिए आप दिलाएंगे? कहाँ से दिलाएंगे बैंक वाला? आप बैंक हैं, आप बताइए, इंस्ट्रक्शन लीजिए। अगर इतना आराम से मिल जाता है तो आज ही हमको दिला दीजिए। सेंट्रल पटना में दिलाइए, किसी ब्रांच में देखें। Don't go by those instructions which Mr. Rohit Raj is giving you and his officers are giving you. But two things are there. That there was a mistake which the bank realized, therefore it proceeded. So it is an admitted fact that the bank committed mistake. So far as mistake is concerned, it may be a human error that it was not uploaded in the CBS when the branch was bifurcated.
But at the same time, there were procedure against, penalty has been imposed against one major penalty, against one minor penalty. So this petitioner, what should she get? Yes, अब आप आइए, अब आपका रोल खत्म हो गया, बैठिए। हाँ बोलिए, क्या मिलेगा इनको? आप कौन है? I am for the petitioner, my lord, sir. पूरा रामायण खत्म हो गया और सीता कौन है? अभी आप आए हैं, कितने साल बाद आए इस केस में? रोज ये केस का हियरिंग हो रहा है, आप फीस लेकर गायब हो गए। Sorry, my lord. सॉरी माय लॉर्ड क्या? वेयर वेर यू? Due to mistake, I am not. What mistake? I am hearing this case on regular basis and you have disappeared. Your client has engaged you. She has all the right to proceed against you under the Consumer Protection Act. I will order for that. क्या कहना है आपका? बोलिए। जो क्वेश्चन हमने किया उस पर बोलिएगा, कहानी मत बताइएगा। My lord, sir, no notice has been served to the. चलिए बैठिए, अब आप समझ गए कितना आप पढ़ कर आए। हाँ बोलिए मिस्टर अमाइकस, कंपनसेशन इशू पर बोलिए। तो एक चीज खाली बता दें, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के बाद the banks will not have come out with a policy in which we have brought on record that policy is Supreme Court judgment says that ombudsman, to formulate a policy. and in that policy you have appointed ombudsman, retired employees of bank who will favor you. जी क्लॉज 15.2 है liability of the bank, उसमें liability of bank arising from events like fire, theft, burglary, dacoity, robbery, or in case of committed by the employees of the bank. It is the responsibility of the bank to take all steps for so and so. लेकिन as bank cannot claim that they bear no liability towards their customers for loss of contents of the locker in instances where loss of contents of locker are due to incidents mentioned above or attributable to fraud committed by its employees. The bank's liability shall be for an amount equivalent to 100 times the prevailing annual rent of the safe deposit locker. 100 तो क्या है रेंट? समय 700 700 700 था, अभी 1500 है। 1500। but what is important, my lord, is that in contravention of the guidelines they have taken about I think 25,000 as a fixed deposit. ये लोग लेते हैं। नहीं, all Guidelines. this business is going on. Guidelines say My that wife 3 had to years pay spent- 1 lakh. She had to also give a FD of 1 lakh few years back for taking a locker. बड़ा लॉकर लिया होगा। नहीं, बड़ा लॉकर नहीं, आपके पड़ोस में लिया और हमको बिना बताए लिया। इसीलिए कुछ हम तो FD नहीं करने देते। अमिताभ दासगुप्ता वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में SCC ऑनलाइन में 2021 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 124 में क्या बोलिए? एक्शन था, गाइडलाइंस डायरेक्टेड द रिजर्व बैंक टू ले डाउन कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शंस मैंडेटिंग द स्टेप्स to be taken by banks with respect to locker facility and to issue suitable rules and regulations. In pursuance thereof, कितना आपके हिसाब से कितना कंपनसेशन बना? हमारे हिसाब से वो जो आज के रेंट के प्रिवेलिंग रेंट लिख रहे हैं तो 1500 रुपया रेंट है, तो 100 टाइम्स thereof would be 1.5 लाख। 1.5 लाख। अब आपको लगता है 2000 रेंट है? इनके बैंक का पता नहीं। SBI RBI में क्या रेंट है? ये PNB में क्या रेंट है? अभी 1500 रुपया। 1500 रुपया सालाना। तो 1.5 लाख आप दे दीजिए। 1.5 लाख का चेक लाइए, कल चेक लाइए 1.5 लाख का। It is your own case, therefore you must come with a check of 1.5 lakhs. Then thereafter I will decide the case. दिक्कत होती है कि ब्रांच मैनेजर के हाथ में रहता है। किस ऑफिसर के हाथ में है? चीफ जनरल मैनेजर के हाथ में है, बुला लें उनको। तो बुलाने का जरूरत नहीं है, खाली समय। The Punjab National Bank has violated the guideline of the bank for payment of compensation as per the own admission of Punjab National Bank. सुनिए मिस्टर शाही, अभी बाद में इंस्ट्रक्शन लीजिएगा। क्या लिखा है? The Punjab National Bank has violated its own. It is admitted by Punjab National Bank that it has violated its own guideline for payment of compensation.
The compensation as per guideline is to be paid by the bank, which should be 100 times of the current market rent, yearly rent of the locker. 100 times the prevailing annual rent of the same. वही लिख लीजिएगा 100 टाइम्स. कौन सा पेज पे है? Page 56 of the supplementary. पेज counter. 56 ऑफ द सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट से ले लीजिएगा. In these circumstances, the Punjab National Bank will come with a check in the name of the petitioner tomorrow of the compensation amount as admitted by them, failing which the Chief General Manager of Punjab National Bank will personally appear tomorrow. Failing which है? I have not ordered for personal appearance. Let us meet tomorrow. पैसा तो देना ही है, तो 20 उसको रखा जाए. No 20. चेक बनाना है. आप चेक तो बनिया जाएगा उधर. रात भर खोल के रखिए, सीजीएम के ऑफिस में जाके ब्रांच मैनेजर को बैठाइए और ये ऑर्डर प्रोनाउंस कर दीजिए. अभी कवरी जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनसे करा लीजिए. आप अभी काहे के लिए कंसर्न, बाकी चीज तो कल करेंगे. अभी तो आपको चेक एक पिटिशनर को अभी एंट्री और एंड माइंड इट, दिस इज नॉट द फाइनल कंपनसेशन, दिस इज एन इंटरिम कंपनसेशन. लिटिगेशन कॉस्ट आपको सब वो सब भी बाद में दिलवाएंगे. अभी के बेचारे ब्रांच मैनेजर इतना डिलीजेंट है, वही कहे कि दूसरे माने पुराना कहावत है ना कि घास खाए कौन और मार खाए कौन, वही हो रहा है. तो इनको क्या दिक्कत है? ही इज नॉट बीइंग, ही इज रिप्रेजेंटिंग द ब्रांच विद द रिकॉर्ड्स. आई एम नॉट टेलिंग हिम दैट यू हैव डन इट. He should understand this, and you should make him understand that he should not be afraid that some personal liability or penalty is going to be imposed upon him. He is representing the bank, you are representing the bank, your junior is representing the bank, and you all are here because of the misdeeds of your bank. I would just couch it in slightly more, some mistake in uploading that in the CBS system. This is the difference between Doon School English and Ramakrishna Mission English. So, better है रामकृष्ण मिशन का अंग्रेजी, हम लोग अंग्रेजी भूल गए. And next, the learned senior counsel for RBI will inform this court tomorrow as to what action should have been, as to under the guidelines for violation, as to under the guidelines, if the as to violation of the guideline, for violation of the guidelines, what action is proposed, was taken by the RBI or is proposed by the RBI against the Punjab National Bank. For ombudsman concern, my lord. ओम्बड्समैन को तो अभी छोड़ दीजिए. हुजूर उन्होंने ओम्बड्समैन पर हम कल लिखाएंगे. That is a cryptic order, I must confess. नहीं, दिस ओम्बड्समैन इफ ही स्टिल अभी भी हैं आपके यहाँ. नहीं, ombudsman जो creation है, that is institution in itself. But my lord, I don't deny the institution, but I will advise RBI जी, to make changes in the ombudsman yes, that guidelines, we have. that independent persons have trained in law. I will not say, आप ले आइए ना किसी PSU के लॉ अफसर को भी अपने यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. But a person trained in law and independent of the bank. एक बैंक में काम हुआ तो दूसरा बैंक